Hi, good evening everyone. This is your friend the Whisky Man and आज का ये एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज आई थिंक आप लोग सब देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने तीन 12 ईयर एज्ड विस्कीज़ हैं जिनमें से एक सिंगल मॉल्ट है एंड एक बाकी दो ब्लेंडेड है 12 ईयर्स ओल्ड और उसके अलावा एक हाई एंड विस्की भी हमारे पास यहाँ पर है दैट्स द जॉनी वॉकर गोल्ड लेवल रिजर्व। अगेन मैं दोबारा से इसमें आपको क्लैरिटी दे दूं, जॉनी वॉकर गोल्ड लेवल रिजर्व का इन तीनों से कोई कंपैरिजन नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट 18 ईयर्स ओल्ड विस्की। ये नो एज स्टेटमेंट के साथ आती है आज के दिन, लेकिन पहले जॉनी वॉकर गोल्ड लेवल को ही हम 18 ईयर्स बोला करते थे। नाउ वी हैव अनदर वेरिएंट जिसको अब हम बोल रहे हैं जॉनी वॉकर प्लैटिनम, और अब तो वो भी डिसकंटिन्यू हो गई है मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट से। उसके जगह पे जॉनी वॉकर 18 ईयर ओल्ड आ रही है। आई सपोज जॉनी वॉकर समझ गया होगा कि एज स्टेटमेंट इज समथिंग जो कि उनको एशियन मार्केट्स के लिए रखना है, बिकॉज पीपल आर वेरी स्पेसिफिक एंड चूजी व्हेन दे स्पेंड सच एन अमाउंट। सो इन सब के आज का जो रिव्यू होगा, इट्स गोना बी अ रिव्यू, इट्स गोना बी अनबॉक्सिंग, इट्स गोना बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस व्हिस्कीज आर, इनके क्या इम्पैक्ट्स हैं, किसका क्या टेस्ट है, कलर है, क्या स्टोरी है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद आवर हमारी इन सारी ब्यूटीफुल विस्कीज के साथ। ओके, सो सबसे पहले आई वुड वांट टू से कि हम गोल्ड लेबल से शुरू करते हैं। गोल्ड लेबल मैंने जैसे कि आपको बताया, इट इज़ एन 18 ईयर ओल्ड विस्की। सो जब ये लोग बोलते हैं कि 18 ईयर्स ओल्ड विस्की है, इट डेफिनेटली डज नॉट मीन कि सारी विस्कीज उसके अंदर जो ब्लेंड है, खास करके ब्लेंडेड विस्की में सारी ही 18 ईयर्स उसमें होंगी। इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम 18 ईयर्स वाली उसके अंदर आपको विस्की मिलेगी, स्कॉच मिलेगी। अगेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट कंफ्यूज बिटवीन अ स्कॉच एंड अ विस्की, अ बर्बन। सो व्हेन वी से स्कॉच, सो ऑल ऑफ दीज 3 are Scotch, so they have been bottled and produced in Scotland, so that's why we call them Scotch. अगर ये यूएस में प्रोड्यूस हुई होती 51% उसके अंदर अगर कॉर्न होता तो वी वुड कॉल इट अ बर्बन। अगर आयरलैंड में प्रोड्यूस हुई होती तो आयरिश विस्की होती। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द गोल्ड लेबल रिजर्व। सो सबसे पहले इसको देखते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल बॉटल, इट्स अ ब्यूटीफुल पैकिंग दैट वी हैव, जिस पे जॉनी वॉकर का एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइन है। यहाँ पे प्रोमिनेंट साइन एंड सिग्नेचर यहाँ पे हम देख सकते हैं। एंड लेट्स जस्ट गो थ्रू जो इसके पीछे होता है। इट्स मोर ऑफ अ सेलिब्रेशन ड्रिंक। यू डोंट ऑफन ड्रिंक सच सॉर्ट ऑफ अ विस्की। इट्स रियली हाई एंड एंड वेरी प्राइसी दैट वेज। अगेन इन सारी विस्कीज में जो मुझे कमी लगती है वो ये है कि ये सारी दे ऑल हैव नेचुरल एडेड कलर्स। अगेन इट्स अ साइन ऑफ लग्जरी, इट्स अ लग्जरी स्पिरिट, बट ये एक थोड़ा सा इनमें लगता है, देयर ऑल चिल फिल्टर्ड, ये सारी चीज़ें हैं। So again, when you look at this bottle, this looks very premium. This is way too sexy to handle. So I'll just open it for you guys and help you understand कि है क्या, कैसे होता है ये। So I've already tasted a few drams out of it, and this is the bottle. It's a crystal clear bottle. So whenever you have a look at any of the Johnnie Walker bottles, they might seem, you might seem to have a resemblance, but they're all different in one or the other way. Like if you look at its base, it's very different from the other Johnnie Walker whiskies. So it's really cool यार। ये बहुत ही heavy bottle है with a very heavy base. So even if you want कि अगर किसी से by mistake गिर जाए तो वो नहीं हो सकता। So that's for sure. So ये मैं यहाँ रख देता हूँ। Again, that's Johnnie Walker Gold Label Reserve for you guys. Right. So now the another whiskey, another Scotch single malt, I would say is, or I think let's just take up the blended whiskies first. Another whiskey that I have for you guys is the Johnnie Walker Black label. This is one such whiskey which I don't think so that कि हम में से कोई होगा जिसको नहीं पता होगा कि ये whiskey है क्या। ये it itself is a style statement. It speaks for itself. This is the world's most sold whiskey. ये उस कैटेगरी में आती है विद अ वेरी डायनामिक पैकिंग, और जिस तरीके से इसको मार्केट किया जाता है डियाजियो और सॉरी जॉनी वॉकर की तरफ से। सो इट्स रियली इनक्रेडिबल। इंडिया में मोस्टली यूल फाइंड इट इन 75 CL, दैट 750 ml, बट अगर आप एयरपोर्ट से परचेज करते हैं तो यू माइट गेट 1 लीटर। सो दैट अगेन डिपेंड्स आप कहाँ से परचेज कर रहे हैं। अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो इंडिया में हर सिटी का, हर स्टेट का अपना अलग लॉ है, हर स्टेट में अलग इस पे बिकती है ये बॉटल। बट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे आई कैन अफोर्ड इट फॉर प्रॉब्ली अबाउट, इट वुड रेंज बिटवीन 2500 to 3000 bucks। अगेन डिपेंड्स कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ वो चीज़।
इट्स अ वेरी यूनिक बॉटल, ब्लैक लेबल का इसका अपना वो है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट जॉनी वॉकर बॉटल्स, इवन इफ यू टॉक अबाउट हाई एंड, आप इसकी स्कॉच और विस्की के बारे में बात करोगे, they send it in India with these filters. Yeah, that's really unique. So again, I've just opened, unboxed this bottle. That's a Johnnie Walker Black label, 12 years old whiskey. So again, when I say 12 years old, that means any of the blend. इसके अंदर कोई भी है. Mostly people say when they taste it, again, that these are not, you cannot actually say कि ये चीज़ सही है या गलत है. So whenever they taste it, they say कि यार इसमें हमें कादू का टेस्ट आ रहा है. So again, it could be that there's a lot of कादू that's been put in, कादू डिस्टिलरी से लेकर लाया जा रहा हो इसके अंदर. So again, it's 12 years, so that means bare minimum जो भी इसके अंदर विस्की है, that is going to be 12 years old. It's not कि 12 years ही exact है, but यार see the beauty of this bottle. एक चीज़ 12 साल एक बैरल के अंदर रखी हुई थी and you have it in your hand today. और उसको आप enjoy कीजिए. Drink this responsibly. These are no I would say these are no regular whiskeys or regular scotch that you can just drink up, just keep on having drams one after the another. You should enjoy these whiskeys. They have been kept in a barrel for 12 years just for you, and again you have angel share, कुछ ना कुछ evaporation भी उसमें से हुआ ही होगा. So I would say that drink responsibly, right? So this is the another whiskey that we have here. Again, I've had a few drams out of it. I am a black label lover. So let's just keep it here again. Let's just keep it aside. Then we have the Chivas Regal, 12 years old. Again, guys, this needs a round of applause. The kind of packing, the kind of marketing that Chivas does it's impeccable. So it's really, really great. And again, Chivas में आप लोग देखोगे every 3 years, 4 years down the line, they'll change their packaging, or they not exactly packaging. They'll change this thing. The way this thing, the logo looks or whatever it is, you can actually make out. I already have another bottle that we can actually really correlate it to and say कि हाँ पिछले 5 साल में इन्होंने कैसे change किया है, ये यहाँ पर आ जाएगा. It's a bit of different. So again, very dynamic sort of a packing. 1801. This says blended Scotch whiskey and aged again 12 years old. आप देख सकते हो इसको भी. And again, this is a very hearty whiskey, and I think out of this lot, I've had a lot of Chivas lately, and I think इसमें जो एक hazelnut का जो taste है, जो after taste एक रह जाता है, that's really, really sweet, and you have that caramelized sort of an ending when you drink this. So it's really it's really, really great. Yeah. So this whiskey is one of the finest, and it's really smooth, if I say so. Out of the lot, this is very, very smooth. So I'll just open this box for you so that you guys can have a look at what this is. And again, just wanted to remind you, all of these scotches, whiskies, they're all signs of royalty. So you have to enjoy these. You don't just have to वो बोलते हैं ना कि यार आप पीते जा रहे हो फिर बोलो यार चढ़ तो रही नहीं है. Typical Indian mentality and Indian जो हम एक अपनी लैंग्वेज में हम बोल देते हैं. So this is such a nice bottle. Yeah, if you look at it, it's such a nice bottle. So whenever you guys open whiskey, और जब भी आप लोग उसको पी रहे होते हैं, just make sure that you have a hand held at the bottom of it, because again ये पूरी bottle एक उससे बनी होती है, and when this has been assembled afterwards. So कई बार होता है कि base इसका थोड़ा सा weak होता है. So that's the exact way. If you look at the connoisseurs holding a bottle of wine or anything whiskey that's been served to you in a 5-star or somewhere for that matter, they'll always hold it like this in order to demarcate. It's actually it's a sign of royalty, guys. It's really you should feel proud that all of these whiskeys are available to us. And मतलब इसको मेरा कहने का मतलब ये कि यार इसको सिर्फ नशे के लिए मत पीजिए. There's a lot of it's a taste that you should be appreciating when you have such sort of whiskeys, right? So ये हमारी बॉटल है. ये अभी तक खोली नहीं है मैंने. एक मेरे पास बॉटल खुली हुई है बट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है. सो मैं उसको अभी यहाँ नहीं लाया हूँ. ये एक और मैं खरीद के लेकर आया हूँ अभी. सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस, एंड दिस इज रियली, रियली अमेजिंग. मतलब क्या कहना, इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है. इट्स रियली डिफरेंट, राइट? So now coming to a last whiskey, or I would say single malt out of the lot. In सब में यही एक single malt है, बाकी सारी blended whiskies हैं ये. It's a 12-year statement. This is the world's second most, और कुछ agencies और कुछ इसको जो rating वो हैं whiskey organization में, this is the second most
दिस इज मतलब सबसे सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ग्लेनफिडिक आती है. दिस इज द सेकंड मोस्ट सोल्ड सिंगल मॉल्ट इन द वर्ल्ड. And again, because of which, I'll tell you a story about Glenlivet 12 years old. So this particular scotch is almost extinguished. अभी है नहीं ये, इसकी जगह पे ही फाउंडर्स रिजर्व को लॉन्च किया गया है Glenlivet 12 years की जगह पे ही, बिकॉज इसके रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं वर्ल्ड में. इतनी ज़्यादा कंज्यूम हुई, या आप ये कह सकते हैं इनकी प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है. इट्स रियली ग्रेट यार, इफ़ यू लुक एट दिस थिंग. और इसकी पैकेजिंग अगर आप देखोगे, सो इट्स रियली ग्रेट. So I'll just turn it around, and it's the water I think जो स्कॉटलैंड का है, जो इन whiskies में वो पंच देता है, that कि इनको मैच नहीं किया जा सकता. Again, Scotland is known for its scotches, whiskies and different sort of liquors. So again, if I go on to the color, it's lively gold. Nose, if you nose it, so it's the aroma is very, you'll have that tropical fruity sort of aroma with notable pineapple that you can seek out of it. Palate is very smooth, guys. It's really smooth, and the aftertaste you'll have of pears and vanilla. It's really nice, and when you finish it, you'll have that hazelnut sort of a taste. So I'll just open it for you guys, and I'll show you how does the bottle look like. Again, I've had a bit of this thing now. Soon we'll start off with the tasting part as well. So if you look at this bottle, this is really nice. Again, this bottle doesn't come with a filter. This has a cork onto it. और वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड की बेस्ट साउंड अगर कोई है तो वो होती है बॉटल के कॉर्क ओपन होने की. सो दिस इज द बेस्ट साउंड दैट एनीवन कुड एवर इमेजिन. सो गाइज, दिस इज द अनबॉक्सिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज बॉटल्स. इन माय नेक्स्ट segment you'll see I will be tasting most of these. I'll be tasting them and I'll let you know that how they taste and what are the aftertaste, what is the color, and how should you guys be drinking whiskies. So please subscribe to my channel. आप बेल आइकन पे बटन दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए you can watch it, and like करना प्लीज मत भूलिएगा. Thank you so much guys, really appreciate. Thanks.